Hi guys, I'm Kriti Tiwari and welcome to In Conversation with Kriti. You are watching my first episode of my podcast In Conversation with Kriti. So guys, thank you so much for watching and coming to my channel. If you're here, please subscribe to my channel, click on the bell icon and like this video. So let me start with my first ICK. So any guesses who is going to be my first guest for this episode? Yes, she is absolutely my motivation, one of India's top women entrepreneur. She is a serial entrepreneur, a social activist, five-time TEDx speaker, and a lot more. You'll get to know about her incredible personality in my podcast, and absolutely you're gonna love her because she's really someone who has motivated me a lot. So let's start with the conversation. Let's try to know her even more deeply. Come check this. So, hi, ma'am. How are you? First, let's start with this. Hi, Kriti. I'm very good. How are you? It's actually been long, and I'm very happy to see that you've actually started with that podcast series that you really wanted to. So, congratulations. I'm doing good. How are you? Thank you so much, ma'am. I am also doing good. So, yes, it has to be started because I think the first motivation I got from you only. We did our live in March, and where I have discussed, and and it was in my mind for a longest time that I have to be on YouTube. I have to start my podcast and my channel, but due to some delays, it wasn't working. But yes, now finally I'm doing this, and having you as my first guest, it's an absolute honor and it's a big thing for me. So thank you so much for coming on short notice and thank you. You're just being too sweet, but better late than never. I'm glad you started. And it's equally amazing whenever I get the chance to interact with you. So, thank you for having me. Thank you, ma'am. So, ma'am, let's start with this. Let's start the conversation. So, we all know about your journey, but the much you have covered, it's never been too boring to know your journey again and again. It's always given you a spark in everyone. So, let's start with how the journey of entrepreneurship has started, how what's ups and hills you have faces in your life, downs and all. So yes, now let's start with this. Great. So let's start with how I started. But I'll just kind of would like to repeat this because for me, entrepreneurship was very experimental. बहुत बारी ने ऐसे लगता है कि मुझे तो day one से ही पता था मुझे करना क्या है. That's the reason I'm able to kind of do some work a little faster. But ऐसा नहीं था. I think all of us go through a time where we really don't know what is happening, what is it that we want to do. And 99% I'm sure we start with something else. Life में बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे करना है मैं बनूंगा. But reality में वो नहीं होता. Most of us end up taking something else. So it was very similar with me. Never wanted to be an entrepreneur. Honestly, 2014-15 तक तो entrepreneur की spelling भी नहीं आती थी, बस बहुत fancy word लगता था. So I wanted to be an engineer. I don't know now. I think it was because of the family pressure that I had, because they wanted me to be passed out from an IIT institute only. So that's the reason I took science and I did these IIT coachings. तो जितना मुझे याद है जब मैंने होश संभाला तो मेरा एक ही गोल था कि मुझे IIT में एडमिशन लेना है और इंजीनियर बनना है और एक अच्छी नौकरी होगी. That is what is the conventional way of being settled. कि यार लड़कियों के लिए तो ये ज्यादा बेटर है. तो 11th-12th में साइंस ली, जेई के लिए प्रिपेयर किया, हुआ नहीं, फेल हो गई एग्जाम में. तो दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज अ वेरी बिग फेलियर. अभी हंसी आती है सोच के कि यार इट वाज जस्ट एग्जामिनेशन फेलियर, बट तब बहुत बड़ी बात होती है ना, ऐसे लगता है आपकी दुनिया इज गोइंग टू क्रैश. So that was the time when I actually started experimenting, and I think it's for all the kids who are in school also कि उनको लगता है कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उनका करियर ही खत्म है, बट वी डोंट रियलाइज दैट करियर शुरू भी नहीं होता उस टाइम पे. सो आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू काइंड ऑफ स्टार्ट. So I think after that examination failure, I became a little serious about life. कि अब क्या करना है? And to be very honest, मेरे को ना compensate करना था कि यार अभी ना बहुत बेइज्जती हो गई है कि exam clear नहीं हुआ, तो I have to do something. So that was the time when I experimented a lot. I tried my hands into modeling as well. तब I was very thin. Now of course I've gained weight because of whatever reasons. But then I started experimenting and modeling also. वो भी इतना नहीं मेरे को suit हुआ because वहाँ पे ना you have to be, again, nothing against modeling. I think it's a brilliant art of and field of work. But here at that point of time I realized that maybe I'm not an actor, I'm a director. कि आप मुझे गाइड करो, इंस्ट्रक्ट करो, तो मेरे को वो प्रॉब्लमैटिक दे रहा था. मुझे था यार आई वांट टू बी द डायरेक्टर, आई वांट टू बी द वन हु वांट टू हैव अ विजन, मुझे कुछ करना है. तो ऐसे करते करते ट्राई डिफरेंट कोर्सेज. एक्चुअल साइंस एज अ प्रोफेशनल कोर्स भी मैंने तभी शुरू किया कि पेपर्स क्लियर होंगे, इफ नॉट दिस. थैंक गॉड बोर्ड्स में परसेंटेज अच्छी थी तो मेरे को एडमिशन मिल गया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, व्हिच वाज डीयू. तो आई कॉम्पनसेटेड फॉर दैट. तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत एक्सपेरिमेंटल था क्योंकि अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैंने शुरुआत तिलकारी से की थी. आई ऑलवेज से दैट आई स्टार्टेड एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर वेयर द आइडिया वाज कि बच्चे भीख मांग रहे थे, मुझे देख के बुरा लग रहा था, बट मुझे था यार कुछ करते हैं. बुरा सबको लगता है, आपने क्या अलग किया, सो लेट्स ट्राई. तो वो एक्सीडेंटल एडमिशन हुआ और जब एडमिशन हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई. ऐसे होता है ना, किक मिल गई लाइफ में किसी काम से, तो आपका काम आपको किक देता है. तो वो इम्पैक्ट जो था ना कि यार एक एक्शन की वजह से बच्चे की लाइफ बदल गई, वो किक वो समथिंग जो मैं ढूंढना शुरू हुई. दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड एंड अंडरस्टूड दैट ओके,
एडमिशन नहीं, आप एक आइडिया ला सकते हो, आप उसका प्रोजेक्ट बना सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो। और इन द प्रोसेस कृति मुझे रियलाइज हुआ दैट मे बी मैनेजमेंट मे बी कम्स नेचुरल टू मी, क्योंकि मेरे लिए ना वो इतना मुश्किल काम नहीं था लोगों को कन्विंस करना। मे बी आई वाज गुड विद स्पीकिंग, तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज माय स्ट्रेंथ्स, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ना being a fish we want to climb the tree which is not the very right way। तो पहले ये समझना जरूरी है कि यार मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे है। मॉडलिंग में मुझे समझ आ गया कि यार शायद मैं इंस्ट्रक्शंस ले नहीं सकती, अगेन नो ईगो, बट शायद मैं नहीं ले सकती, सो आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। फिर किलकारी में समझ आ गया कि यार मैनेजमेंट अच्छी है, तो आई अंडरस्टूड माय स्किल्स एंड देन आई थॉट दैट व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई कांट आई हैव अ कंपनी ऑफ माय ओन। तो धीरे धीरे इंटर्नशिप शुरू की, ईआईआर बनी, सिर्फ जाती थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब लेती थी, मुझे आता कुछ नहीं था, बस बैठती थी टू सी हाउ डू दीज फाउंडर्स, व्हाट डू दे डू डिफरेंटली, आइडिया कैसे आता है, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। पहली बार देख के मैं इतनी खुश हो गई कि शाहरुख खान दिख गया, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। तो फिजिकली आप जाते हो, आई यूज्ड टू गो अ लॉट, पिचिंग इवेंट्स हो गए, co-working spaces हो गया, so just going and sitting there used to make me happy। So it started like that, then from social entrepreneurship I came into startups, then got my few startups acquired, that gave me a little more confidence, then game happened, human science happened, binge happened, now जो मार्च से अब तक का प्रोग्रेस है वो शक्ति है, इसके बारे में हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे। तो मेरे लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल था, नहीं पता था डे वन पे, सो द ओनली मैसेजेस कि यार एक्सपेरिमेंट करते रहो, अपनी स्ट्रेंथ संभालो, शुरू करो एंड जस्ट स्टार्ट इट ऑफ, यू हैव नथिंग टू लूज। सो या मैं बोलूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई कीप इट क्लियर। No, absolutely, ma'am. There are lots of questions coming into my mind, but I would like to start with Kilkari because it was your first ever project, which you have handled it as an entrepreneur. And at that time, I'm sure you were completely new, having no knowledge about entrepreneurship, investors, and anything. And now you are doing Sakti. So how would you define what's the, absolutely, you got that help like of confidence in this, but would you like to elaborate Kilkari and Shakti more? Because I found it like Shakti is also some kind of social entrepreneurship. Not exactly, but yes, it has a very big social issue attached with it. Yeah. So definitely किलकारी की फटाफट से बात करते हैं। किलकारी की मैं हमेशा सबसे ज्यादा बात करती हूँ, पता है, and it's still the closest to my heart. Yeah. तो किलकारी स्टार्ट ऐसे हुआ था, I just admitted into college और एडमिशन मिल गया था, मैंने बताया बोर्ड परसेंटेज ठीक थी तो एडमिशन मिल गया था, बट वो किक नहीं मिल रही थी जो मैं कह रही हूँ, मुझे ढूंढनी थी। तो एक बारी घर आना था, गाड़ी में थी, एंड आई सॉ किड जो न्यूज़पेपर था उसके हाथ में, वो भीख नहीं मांग रहा था। तो बहुत अजीब था क्योंकि रेड लाइट वगैरह पे ना बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हो, तो मेरे को ना तब क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऐसा क्या है इसको न्यूज़पेपर में, इसको व्हाई इज इट गोइंग फ्रॉम कार टू कार। तो उस बच्चे से बात करके मुझे समझ आया कि उस बच्चे को ना पढ़ना था, ही जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था तो उसको समझ नहीं आ रहा था लिखा क्या था। तो इट्स लाइक देयर आर सम मोमेंट्स दैट जस्ट मेक यू फील कि यार देयर इज समथिंग दैट हैज टू बी डन। तो मेरे लिए ना वो बहुत इंक्लूडिंग मोमेंट था कि यार ये बच्चा नंगे पैर है, कपड़े भी फटी हुई बनियान है, शॉर्ट्स हैं, एंड फिर भी उस बच्चे को ना भीख नहीं मांगनी, खाना नहीं मांगना, उसे पढ़ना है। तो उधर ना पढ़ने की भूख देख के हम यार कुछ तो करना चाहिए। तो गाड़ी साइड में पार्क की, और ये वो लोग हैं जो स्लम्स में नहीं रहते, तो दे लिव ऑन रोड्स। तो आप मेट्रो स्टेशन के नीचे देखोगे दिल्ली एनसीआर में बहुत ऐसे रहते हैं जो सड़क पे ही रहते हैं, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, और वहीं पे उनका कच्चे घर भी नहीं बोलोगे आप, ऐसे टेंट टाइप में वो लोग रहते हैं। तो दैट्स द कम्युनिटी, दैट्स द बंजारा कम्युनिटी। तो आरके आश्रम न्यू दिल्ली की बात है, तो वहां पे मैं गई तो बात की क्यों, और हम लोग इस असम्पशन में रहते कि इनके पेरेंट्स ही पढ़ाना नहीं चाहते, ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा भीख, ज्यादा पैसे, हमारा एक माइंडसेट है। तो मैंने कहा हो सकता है ना हो, बच्चे को पढ़ना हो सकता है, यू नेवर नो, लेट्स गो एंड आस्क। सो इट स्टार्टेड ऑफ क्यूरियोसिटी, जहां पे उन लोगों से बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि इन बच्चों को एडमिट नहीं करते, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में गवर्नमेंट स्कूल में तो एडमिशन करा ही सकते हो ना यार, वहां कौन रोकेगा आपको। In government school, these children should get admission, right? It's their basic right, it's a human right. और मुझे लगा बट नहीं, तो वहां से जवाब ये आया कि हमें पढ़ाना तो है बट एडमिशन ही नहीं कराते। मुझे लगा शायद वो झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं खुद जाके पता करती हूँ इट्स ट्रू और नॉट। इट्स लाइक व्हेन द यूनिवर्स वांट्स इट टू हैपन, इट हैपेंस। रोड क्रॉस करते ही 3 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे एक स्कूल था, एनपी गर्ल्स स्कूल नाम था, बट था कोएड स्कूल। तो रोड क्रॉस करके मैं गई एंड आई टॉक टू द टीचर प्रिंसिपल देयर, पहले अकेले गई थी, टू सी की क्या है क्या नहीं। तो वहां शॉकिंगली दिस वाज द रियलिटी, वेयर व्हेन आई सैट विद द प्रिंसिपल, आई आस्क्ड कि मैम ऐसे बच्चों का मुझे एडमिशन कराना है। तो और कॉन्वर्सेशन भी बहुत टाइम बाद वो खुल के उन्होंने मुझसे बात की, उन्हें लगा मैं मीडिया से हूँ, मैं एनजीओ से हूँ, मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ, पीपल डू दैट एज वेल सोशल इश्यूज के साथ। तो वहां पे उन टीचर ने, प्रिंसिपल ने जो रिवर्ट किया वो ये किया कि यार ये बच्चे ना गली के बच्चे हैं और ये हमारे स्कूल का माहौल खराब कर देंगे, तो मुझे इन बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं चाहिए। अब दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी कि यार आप एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल ना ये नहीं बोल सकते हो, आपका काम है, सरकार ने आपको वहां बिठाया इसलिए कि आप इन बच्चों को शिक्षा दो, ये उनका हक है। तो उनको लगा कि मैं एक्टिविस्ट टाइप हूँ, बकवास कर रही हूँ, शी इज लाइक मैं तो नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लो। तो एक्चुअली वो झगड़े से शुरुआत हुई थी किलकारी की, जहाँ पे देन आई टुक इट ऑन, आई टुक इट ऑन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार नहीं, किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो 2-3 दिन ये चीज स्ट्रेच हुई, मैंने पुलिस की धमकी तक दी कि मैम अगर आप एडमिशन नहीं करोगे, अगेन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट,
कुछ गलत नहीं बोला, बट ये कहा कि अगर आप नहीं करोगे then I have to tell the police that you are not fulfilling your duty. तो डर के मारे इन बच्चों का एडमिशन हुआ, 13 बच्चे थे टोटल, इन बच्चों का एडमिशन हुआ, एंड दैट वाज द टाइम जहां मेरे को मेरी किक मिल गई. मैं खुश, बच्चों का एडमिशन हो गया. एक हफ्ते बाद, क्योंकि मेरे कॉलेज के बहुत पास है, पास आउट फ्रॉम DU, तो मेरा कॉलेज बहुत पास था, तो मैं यूजुअली वहां से निकलती थी. तो एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि यार बच्चे खुश होंगे, मैं अपने दिमाग में अपने आपको बहुत ज्यादा समझती हूँ. आई हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अगेन माय थॉट्स ऑफ असम्पशन. तो हम चलो जाके देखते हैं. 13 में से कृति 8 बच्चे वापस वही फुटपाथ पे थे और बाकी बच्चे स्कूल जा रहे थे. तो वो जब 8 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए तो मुझे बहुत गुस्सा है कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर मेरी क्यों मेहनत लगवाई. तो मुझे तब बहुत गुस्सा है दैट यार आई वेस्टेड माय टाइम, यू रियली डोंट वांट टू स्टडी. मैं क्यों उनसे लड़ी, आई शुड हैव सेव्ड दैट टाइम. तो तब प्रॉब्लम जो थी वो ये निकल के आई कि प्रॉब्लम एडमिशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि RT मतलब राइट टू एजुकेशन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि जो बच्चे की एज है ना वो उसी क्लास में बैठ सकता है. 10 साल का बच्चा तो 5th स्टैंडर्ड में ही बैठेगा, उसको नर्सरी में नहीं बिठा सकते. अगर उसे ABCD भी नहीं आती फिर भी. नाउ दिस इज अ लॉ व्हिच कैन नॉट बी चेंज. तो आप खुद बताओ, अगर 10 साल का बच्चा, उसको ABCD नहीं आती, वो 5th क्लास में कैसे बैठेगा. वो 2 दिन के उसे कुछ समझ नहीं आया, वो तीसरे दिन ड्रॉप आउट कर गया. दैट इज व्हेन वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे स्कूल में भी है फिर भी ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं. एडमिशन कराना वाज नॉट द टास्क वाज क्या वो पढ़ के लाइफ में कुछ बन जाए. अभी वो सोच रहा है कि शायद मैं मैक्सिमम रिक्शा खींच पाऊंगा या गाड़ी चला लूंगा. मैं चाहती हूँ बच्चा कल को एटलीस्ट ये तो सोचे कि यार मैं शायद इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को एक स्टेज आगे लेके जा सकता हूँ. सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद व्हिच वी स्टार्टेड किलकारी. वी वर लाइक यार एडमिशन तो कराएंगे ही, RT के अंडर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में आप कराओ, इनका आके उन्हें कराओ, बट वो ड्रॉप आउट ना हो या एक्चुअल चेंज है. इसके लिए वी स्टार्टेड विद किलकारी पाठशाला, जहां पे 2 एस्पेक्ट्स है. नंबर 1 एडमिशन RT के अंडर, एंड सेकंड इज कि आप उनके बेसिक्स क्लियर करते हो. तो हमने फिर करिकुलम बनाए यार 6 महीने के अंदर बच्चे को इस लायक बना दो वो ड्रॉप आउट ना करे. सो दैट इज हाउ किलकारी स्टार्टेड. एंड फिर मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को लिया, फिर मैंने कॉलेज चैप्टर खोला, फिर हम और कॉलेज में एक्सपैंड हुए, फिर DU के अंदर ही हम लोगों ने 15 कॉलेज में एक्सपैंड किया, फिर 300 वॉलंटियर्स हो गए, फिर 20 स्कूल्स हो गए. तो ऐसे करते करते इट एक्चुअली एक्सपैंडेड. And to be very honest, I just feel grateful that yeah, I got the chance to be the one to start this. But then the way people joined it, it was crazy. मतलब हर जगह चल रहे थे और again I was very young. तो वहां से ना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, this is something कि जो मुझे आता है मैं शायद कर पाऊंगी. तो that is how it started. And social entrepreneurship and entrepreneurship सेम ही यार. सोशल में बस ये आ जाता है कि वहां पे टिपिकल इन्वेस्टर नहीं है और वो सब नहीं है, बट आप कर वही रहे हो. एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंशियल पार्ट एवरीथिंग इज सेम. आइडिया, प्रॉब्लम, टीम मैनेजमेंट, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब सेम है. तो ये what Kilkari is, and just too happy that it happened, and maybe I was the chosen one to be doing that. So that is how I started Kilkari. Yeah, it is so amazing and it is such a fascinating story. So ma'am, let's come on Sakti. As you said, it's your new venture. So I would like to know more about it because I'm very much curious about, as its name, Sakti means lots of energy. So yes, ma'am. श्योर. तो शक्ति जो है कृति वो इस इंटेंशन से बना है. तो पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं. आई थिंक एज वुमेन यू ऑलरेडी नो द प्रॉब्लम, एज इंडियंस वी नो द प्रॉब्लम. आप रेप बोल लो, ईव टीजिंग बोल लो, डोमेस्टिक वायलेंस बोल लो. मेरी पहली टेक टॉक भी थी कि यार विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, इनइक्वालिटी विद इनइक्वालिटी. तो अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि ना women are going ahead and they're getting their rights and everything, but equality बोलने को है, but उसके भी अंदर inequality है. और there are some things जहाँ पे आप चीजें डिमांड कर सकते हो और कुछ चीजें जहाँ आप चीजें डिमांड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल विमेन सेफ्टी. अब आप विमेन सेफ्टी को ले लो, मैं 10 जगह 10 लोगों को जाके बोल दूं कि यार विमेन सेफ्टी होनी चाहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला. राइट? आफ्टर 2012 निर्भया केस, आई वाज वेरी यंग, all of us were very young and I was in school at that point of time, but ना कुछ चीजें ना छाप छोड़ जाती हैं आपके दिमाग में. And for me निर्भया 2012 केस was that. और उसके बाद ना दिल्ली क्राइम सीजन 1 में भी निर्भया केस को बहुत एक्सपैंडेड दिखा हुआ है. एंड जस्ट आउट ऑफ थॉट एंड बीइंग अ वुमेन, I kind of फेल्ट, और हर लड़की फील करती है कि यार जब एक ऐसा क्राइम हो जाता है ना, लड़की को विक्टिम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं उसकी लाइफ खराब हो गई, उसकी फैमिली सफर करती है, while the people who have actually caused that problem, they don't get affected, they're out, they're free. तो ये inequality हुई ना यार, और इसको मैं बोल के कैसे ठीक करूं? फिजियोलॉजिकली मैं मसल्स तो बना नहीं सकते एक आदमी को पहनने के लिए. Nature has made a woman a little soft, a little tender. So the point was, and it was again curiosity. तो चलो ये तो मेरा इमोशनल एस्पेक्ट है कि मेरे को इसको सॉल्व करना है. अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पे कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं. पेपर स्प्रे है, पुलिस है, हेल्पलाइंस है, फोन है, लाइव लोकेशन है, बट उसके बाद भी क्राइम रेट्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो माय entire question of starting this was, as an entrepreneur, can I make something that gives the power of safety of women in their own hands? कि मैं शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति मीन्स पावर, राइट? और शक्ति इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम ऑफ इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा. अभी नवरात्रि में तो सब माता की पूजा करते हैं, बट नवरात्रि खत्म होते ही यू स्टार्ट ट्रीटिंग वुमेन द वे दे हैव बीन ट्रीटेड फॉर यॉन्स, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट आई वाज नॉट ओके विद. सो शक्ति इज सिंपल. शक्ति मीन्स पावर, एंड शक्ति इज giving the power of my safety in my own hands. If I don't have a GPS, if I don't have a cell phone, if I don't have the police, if I don't have the government, can I protect myself?
That was the question with which I started, and now I'm happy to say that the answer to that is yes. तो जब मैं गेम साथ साथ हमारा चल रहा था तो हमारी शक्ति पे R&D शुरू हुई. तो शक्ति, without any creating further suspense, मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ, is a smart wearable technology that we have generated. So ये एक स्मार्ट बैंड है which is an anti-rape device. इसके दो फीचर है, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड SOS सर्विस. इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, whenever a woman is wearing it and if she feels that her safety can be compromised, रात को अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अकेले रोड पे जा रहे हो, whatever it is, एक बटन अटैच्ड है, you have to press that button twice इसलिए क्योंकि एक बारी गलती से भी हाथ लग सकता है, आपको 2 बार इसको प्रेस करना है. It takes like a second or something, and this has to get in touch with the skin of an attacker. सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर आप अटैकर के टच में इस बैंड को लेके जाते हो तो सामने वाले को इलेक्ट्रीफाई कर सकता है और उसका नर्वस सिस्टम डाउन करेगा for 20 minutes. आप किसी को डेथ, you know, you're not causing any death, so it is not life threatening, it is just lowering down the nervous system, जिसमें वो शायद बेहोश हो जाएगा और आपको 20 मिनट का टाइम मिल जाएगा वहां से एस्केप करने के लिए, पुलिस बुलाने के लिए, फोन यूज करने के लिए, लोकेशन भेजने के लिए. तो द पॉइंट वाज कि बिना अवेलेबल सॉल्यूशंस के क्या मैं खुद इस प्रॉब्लम को डील कर सकती हूँ, एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिफिकेशन फीचर. सो आप अब फाइनली अटैकर्स को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हो और साथ साथ एक SOS फीचर भी है. जब भी आप ये इलेक्ट्रिफिकेशन फीचर ऑन करोगे, आपकी लास्ट जो लाइव लोकेशन है वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चली जाएगी, आस्किंग फॉर एक्सटर्नल हेल्प एज वेल. दैट हाई, फॉर एग्जांपल मैंने या कृति ने यूज किया तो हाई, माय नेम इज कृति, दिस इज माय लास्ट लोकेशन, आपकी लोकेशन चली गई, आई नीड एन एक्सटर्नल एड, ताकि यू नो आपके आसपास सराउंडिंग्स में भी पता चल जाए. So this is the solution that we have come up with कि अगर कोई नहीं भी आपके साथ, आप खुद को ऐसी सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हो. So this is what शक्ति is. ये एक स्मार्ट बैंड है, and I think technically मैं पहली बार ही बात कर रही हूँ इसके बारे में क्योंकि लॉन्च नवंबर में पेंडिंग है. I'm happy to announce that the Delhi government would be doing the launch of this project, and this is what Shakti is, Kriti. So the idea was कि यार किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना और लड़कियों को एक्चुअली शक्ति बनाना है. You know why? Girls are already powerful. लड़कियां पावरफुल हैं, लड़कियों में किसी you know they don't lack anything. But the only thing is that unfortunately our just a second. Sorry. So unfortunately, our society or ecosystem has really failed to give them that confidence. So Shakti is making the Indian girls the Shakti that they already are. So this is what Shakti is. This is like wow. It literally blew my mind. Term Shakti and the way you have connected with the technology. This is super. Like I first time heard anything like this. You have that band, a sensor in it, and it is something very big, and you are giving something a girl really needs to be. So ma'am, how this idea came to your mind, like to make something which is not that life threatening, but also it can slow down the nerve system of a person for some time, and that obviously a victim, as we said, so-called victim or girls can get a time to rescue herself. So how this idea came to your mind? I'm a little bit curious to know about this. Sure, Kriti. तो as I've said, you know, 2012 निर्भया केस के बाद एक छाप तो छोड़ दी थी मेरे ऊपर ही ऐसे. And you know, this is a problem जिसके लिए ना you don't wait for anything to happen. As girls, and I've grown up in Delhi, and you know, Delhi, you know, is the crime capital of Asia. Now Rajasthan is the one, unfortunately. But ये ना हमारे साथ रोज होता है. मतलब आप बाहर निकलते हो तो आपको डर रहता है कि 8 बजे के बाद बाहर ना निकलो. अगर मैं 10 बजे तक बाहर हूँ तो मेरी मॉम फोन करके बोल रही है, जबकि वो मेरे भाई को नहीं करी है, वो मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है यार. एज अ गर्ल इट्स डेफिनेटली मोर अनसेफ फॉर मी ऑन द आउटसाइड. मैं बहुत कम, अब तो कॉलेज टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ट्रैवल करते थे, मेट्रो में इधर उधर, यू नो, तो लड़कों का स्टेयर करना या यू नो देयर आर सम इशू दैट ओनली गर्ल्स अंडरस्टैंड, जो बाहर की नजर से ना इतना बड़ा नहीं लगता. तो दैट वाज द टाइम वेयर आई एम लाइक यार कुछ तो करना चाहिए. अब करें क्या? अगर आप सीधे झटके मारने लग जाओ या पेपर्स, अब तो मैंने जो स्टडी शुरू की थी ना, दिस वाज एक्चुअली when game was simultaneously happening and we are like यार we have to come up with something. And to be very honest, अभी हो गया R&D में, इसलिए बार-बार बोलती हूँ कि हम भी श्योर नहीं थे कि ऐसा कुछ डिवाइस बन पाएगा नहीं बन पाएगा. क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छा अब तुम आदमियों को मारना शुरू कर दोगी. नो, दैट वाज द थिंग दैट यू यूज्ड टू लिसन, आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट कि नहीं यार इतना भी नहीं है, लड़कियों ने मिसयूज कर दिया तो अगर जानबूझ के बदला लेने के लिए इलेक्ट्रीफाई कर दिया तो, बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन मींस डेथ. सो नाउ जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आई ना, हमने उसको जॉट डाउन किया एंड नाउ वी वर लाइक यार एक एक करके सोल्यूशन निकालते हैं. इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे बट डेथ कॉज नहीं होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है, ये कर सकते हो, राइट? तो दैट इज हाउ इट वाज. क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जाके, अब तो बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए हैं, जब मैं स्टार्टिंग में बताती थी ना आइडिया को तो बहुत लोग हंसते भी थे कि यार ये ना सिर्फ आईटी है, बहुत लोगों ने ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं. उसने भी ट्राई किया, उसने तो फंडिंग भी उठा ली, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. तो जो पूरा हम लोगों ने टाइम लगाया ना, दैट वाज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रैच टू एंड कि नंबर 1 ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है नहीं बन सकता. सेकंड, किसी ने बनाने की कोशिश की नहीं की, वो नहीं की थी, बट अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू डू समथिंग विद द SOS सर्विस. SOS सर्विस के साथ प्रॉब्लम रहती है कि यार जब आप उस सिनेरियो में होते हो ना, जब आपके पास लोग होते हैं, आप इतने डरे होते हो, आपका इतना दिमाग नहीं चलता कि आप फोन निकाल के लाइव लोकेशन भेजो, इतने टाइम में तो क्राइम ही हो जाता है. तो देयर वाज अ प्रॉब्लम विद ऑल द सॉल्यूशंस. पेपर स्प्रे भी बैग में है, मान लो मेरा बैग ही छिल गया, यू नो, मान लो मेरे को टाइम ही नहीं मिला पेपर स्प्रे निकालने का, तो मैं क्या करूंगी?
तो दैट वाज द थिंग यार, सोल्यूशन है बट ऐसा क्या सोल्यूशन निकाले कि भाई किसी की जरूरत ही ना हो, मैं इंडिपेंडेंटली सब कर पाऊं. तो धीरे धीरे करते करते फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर वी लाइक ओके लेट्स डू दिस. एंड द डे आई गॉट टू नो दैट वी फाइनली हैड दैट प्रोडक्ट और वो R&D में पास ऑन हो गया, dude, the happiest day of my life. So I just hope that the intention with which we build and the passion with which we build, because I am the only face which is speaking right now, but पीछे आप टीम देखोगे ना, crazy people, like more passionate than me, and they're like, and most of them are men. So that makes me even more happy कि यार जब लड़के ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना with so much enthusiasm, it's amazing. तो आइडिया तो ऐसे रहता है कि यार कुछ करना है, वो कुछ करते करते क्या करना है, फिर वो आता है स्टेप 1 पे, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, तो वो पूरा R&D प्रोसेस में हम वहां पहुंचते हैं. तो शक्ति ऐसे शुरू हुआ. Amazing. This is so out of box kind of idea, but still I hope that this will come out very good, and we all would love to know more about this when you're going to launch this with Delhi government, right? Yeah. So okay, ma'am, this was all about Sakti. So now let's coming to you. So ma'am, in your initial days, you might have faced so many issues. So many of things were in your line because you are completely new, naive, having no idea about all kind of entrepreneurship, how to talk with investors, and you are not always sure that okay, to whom you are approaching with is going to come to your way and going to help you out. There are lots of so-called judgmental were there. Obviously you might have faced some mental issues also at that time. So how you deal with all those things all together at that time, because you have came so far, you might have not forgotten everything whatever you have faced, you have learned a lot from all those things happen in your past. So how you had deal with this, and yes, like basically how you deal with the situation and you came so far. Sure, Kriti. So that reminds me of one thing, that we live in a world where everything is convention. Some section of society is supposed to do some things. तो मेरा ना इतना मन नहीं होता कि मैं women struggle इनके बारे में बात करूं, but by default I've realized that we have to talk about it to be able to solve the problem. जब तक आप problem address नहीं करोगे आप solve नहीं कर पाओगे. And a lot of times people are like कि यार ठीक है अभी 2022 है, every girl is doing everything, and that is fine. So I never say कि यार this is the time कि लड़कियों को workforce में आना चाहिए. Now what I think that we have a new fight. The new fight is and I am nowhere in the journey to be equal to a man. I don't want to be equated to a man. I don't intend to do that. So when people perceive now that you want something that men already have, no, we don't. It's just that we need our basic human rights. So it's like, as I've said, it's conventional. So females are not expected to break out of the zone, be dominant, be on the top position. और वो किसी ने decide नहीं किया है. The unfortunate part is कि सदियों से ऐसा हो रहा है. Usually एक boss जो है वो 95% is a man only. We say head of the family is the father. और तो वो ना conventionally चलता आ रहा है. किसी ने पता नहीं roles किसने दिए मुझे नहीं पता. तो when people say ना society ने किया, तो मेरे को उस इंसान से मिला जिसने decide किया कि लड़कियां करेंगी लड़के करेंगे. If a man and a woman both are working still, the women only has to cook no matter what. So so ये एक default setting है. And then there's somebody who's as young as 16, 17 years old, जो इसको कुछ experience नहीं है, who is not at all known, and she comes and say, I will not accept it. So people will have a problem with that. So when I go as a sole female founder also, in the initial days, being too young, so that is what it was, because it was not expected. And when I say that, okay, I don't need a male co-founder, or I'm doing it on my own, I've done it on my own, so maybe that is something जो लोगों को time लगा. I have met a very good people as well. I've met a lot of good investors. I've met a lot of men. But in the initial phase, investors only saying कि यार एक investor ने तो मुंह पे बोला था कि female led startup में मैं invest ही नहीं करता. तुम्हें एक दिन सिलाई कढ़ाई करनी होती है, तुम्हें एक दिन makeup करना होता है. You don't know what needs to be done. Women are confused, this and that. So जब आप वो सुनते हो, of course, it's not very good. It's deterioratory. It's not very respectful. And मैं तो बाहर गई हूँ अपने आइडिया के साथ एज एन इंडिविजुअल. मैं तो इस रेस में नहीं हूँ कि यार लड़कों से मुझे बराबरी करनी है. नो, आई एम नॉट इन द रेस. इवन टुडे आई एम नॉट. मेरा कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं है कि मैं एक आदमी के बराबर हूँ. Women by default are superior to men. I don't intend to degrade men again, but then again, I don't feel that we need to be compared to them. It's just that if a man has the right to be able to do without questioning, don't question women as well. So starting days कोई नहीं भूलता, struggles कोई नहीं भूलता. आज things touchwood are better, but then again they're not to the level where I want to take them. जैसे मैंने आपको कहा, शक्ति के साथ I want to guard over झंडा सीन कि यार women should be truly independent, ना सिर्फ बोलने में but actions में भी. मेरे से बोलने से कुछ नहीं होगा. So that is why Shakti is there. Then there is something else that I want to do in the VC fund. वो मेरा आगे का प्लान है कि यार फीमेल लेड VC फंड इंडिया में आज भी बहुत कम है. 2% औरतों को VC फंडिंग मिलती है. मैं वहां में फ्यूचर में कुछ करना चाहती हूँ. तो इट्स लाइक it's just a milestone that I intend to achieve. And आज भी when I get demotivated, I recall those days. और ये मेरे साथ नहीं है यार. मैं उसको सह के आगे बढ़ पाई तो आज मैं बोल पा रही हूँ. ऐसी कितनी लड़कियां हैं, ऐसी कितनी औरतें हैं जो उस स्पेस से जाती है बट वो रिकवर नहीं कर पाती.
उन्हें सच में ऐसे लगने लग जाता है कि ये उनकी रियलिटी है. मे बी दे आर नॉट मेंट टू डू इट. ये तो बाहर वाले लोग हैं. जब आपके फैमिली में ऐसे लोग होंगे, मान लो आपका हस्बैंड ही आपको रोज बोल रहा है दैट यू कैन नॉट डू इट, रोज सुन के और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप नहीं कर पाते. I feel grateful कि चल यार, maybe I was mentally strong to deal with it and I'm speaking today. But what about those millions of women who have not been able to kind of, get out of it? तो मेरे हिसाब से पता है क्या है? You have to get detached from the problem. I'll tell you, Kriti, जब तक ना हम लड़कियां इस चीज से अटैच रहेंगे ना कि ये प्रॉब्लम है, हमें सोसाइटी करने नहीं देती, तब तक ना आप एक विशियस लूप में फंस जाओगे. तो फॉर मी द ओनली वे टू बी डील विद इट इज कि ठीक है यार, it's a problem. Women are not, expected on this. That is fine. I have to be indifferent from that and now only focus on one thing, my work. That's it. मुझे as an individual also, man or a female, but I'll talk about women more because they have to have an emotional tendency also. वो लड़कियों का होता है. We are a little sensitive, but that doesn't mean that we are weak. We are not weak. Being sensitive means that we have a good, emotional nurturing capabilities. That is why females conceive. A mother is a mother because she has that emotional understanding. That doesn't mean that we are weak. It's just that you have a better understanding of emotions. So to any women, who just feel that she's not worth it, या वो नहीं कर सकती, या it's a male dominant profession, ठीक है यार, वो प्रॉब्लम है, आप उसको समझो, बट उससे अटैच मत हो. वो आपकी रियलिटी नहीं है. आपकी रियलिटी आपको बनानी है. अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखो. सो आई थिंक जब आप 100 चीजों पे फोकस करते हो ना, तो यू लूज द फोकस. फोकस सिर्फ एक चीज पे रखो, दैट आई विल ओनली गेट व्हाट आई डिजर्व व्हेन आई प्रूव इट. जब तक मैं वो एक्ट करके अपने काम से लोगों को दिखाऊंगी नहीं, तब तक लोग नहीं मानेंगे. तो मत मानने दो ना, उड़ाने दो मजाक. Who are they? Why should I prove it to them? I need to prove to myself and I should only be focused. तो जब आप बोलते हो ना, how do you deal with it, कृति? देखो, दुनिया चेंज नहीं होने वाली. लोग बातें बनानी छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा. मैं पूरी जिंदगी भी अगर लोगों को बोलूं कि यार मत बोलो, लड़कियां कम नहीं है, who cares यार? Who am I? Why would they listen to me? Nobody really cares. So we have to understand that to be able to change the world, it's just our work. जब तक सृष्टि शर्मा कुछ करके नहीं दिखाएगी, सृष्टि शर्मा का बोलना का कोई फायदा नहीं है. राइट? वैसे कृति बोल रही है सबको कि मैं पॉडकास्ट, हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि यार क्या बकवास आइडिया, बहुत कंपटीशन है, क्या करेगी. बट टुडे यू आर हियर टू बी एबल टू डू दैट. एंड वंस यू सक्सीड एट इट, आप वो गोल अचीव कर लोगे, तो सब चुप हो जाएंगे. तो दुनिया को बदलना छोड़ दो, दुनिया बदल जाएगी. वो कहते हैं ना, गालियां तालियों में बदल जाती हैं. फॉर दैट टू हैपन, आपको अपना काम प्रूव करके दिखाना. दैट्स इट. जिस दिन यू एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट. डोंट लुक लेफ्ट राइट सेंटर. इंटेंस फोकस रखो. बस ये रखो, मुझे करना है. क्यों? क्योंकि मुझे ये करना है, मैं करना चाहती हूँ. That's it. आप अल्टीमेटली जब इतने फोकस हो जाओगे ना, ये it's noise. It's just the pollution. ये noise pollution जो होता है ना, ये सिर्फ वो सब ड्रामा है. And you don't have to take it to your heart. You don't have to feel bad about it. You don't have to consider that. तो मेरे लिए कृति अब ये हो गया कि पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था कि मैं रोती थी, कमरे बंद करके. I used to cry. I actually now I might emerge out somebody who doesn't care, who's very strong. ऐसा नहीं है. Even today I'm equally sensitive how I was before. But now it's just I've made myself indifferent. And that's my only advice to you also, to anybody else. But then इस guilt में मत रहना that I cannot dream big. For women ना, it comes with a guilt. Being called too ambitious comes with a guilt. Oh, she's too ambitious. वो by default ना, she's bitchy, she's too ambitious, she's the boss woman. It's not looked at with a lot of respect, you understand what I'm saying. Yeah. And it doesn't come with a lot of positivity also. Oh, she's too ambitious. अब by default फिर लोगों को लगता है that she might be a very bad human being. She might not be a good daughter. She might not be a good wife, for example. So when women are too ambitious, it comes with a lot of guilt. कि यार अगर अब मेरी मॉम को भी, हमारी मॉम्स को भी ऐसे होता है कि मेरी मॉम, she can't take a day off without guilt. Then she thinks she's a bad mother, she's a bad wife, she's not giving time. Why? She's an individual herself first, right? तो अगर एक आदमी को उसमें guilt नहीं होता, तो why is it associated with women? A man is very good if he's ambitious. सबको सक्सेसफुल लड़के चाहिए. अपनी बेटियों की शादी के लिए भी आपको सक्सेसफुल लड़के चाहिए. बट आपकी बेटी उतनी सक्सेसफुल बन जाए, उसको वो इकोसिस्टम तो दो. एंड आज के टाइम पे भी 70-80% इंडियन हाउसहोल्ड्स में नहीं है वो इकोसिस्टम. तो अगर नहीं है ना, तो हमें मांगना पड़ेगा. आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेट करोगे ना कि आपको मिलेगा, तो आपको कोई कुछ नहीं देने वाला. दैट इज व्हाट आई फील. सो दैट्स द ओनली थिंग. डोंट अपने अंदर से गिल्ट हटा दो कि यार मैं डोंट बी. एंड आई सीन अ लॉट ऑफ वुमेन इन शक्ति आल्सो. जब हम स्टार्टिंग की सैंपल सर्विस कर रहे थे, आई मेट अ लॉट ऑफ वुमेन एंड मोस्ट ऑफ देम लाइक above 30, above 35. सो दे आर ashamed कि यार हम आ तो जाए, बट क्या ये है वो है. तो दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ गिल्ट. तो खत्म करो उसको यार. तो आई थिंक stop seeing yourself as a woman or a man. Just see yourself as an individual. Gender बाहर वालों को डिसाइड करने दो, वो उनका नॉनसेंस है, वो उनको बकवास करने दो. Just be super focused and I think once you achieve it, सबके मुंह बंद हो जाएंगे. आप समझ रहे हो? अब अगर मैं शक्ति का प्रोडक्ट नहीं बनाती और 10 साल से सिर्फ ये बोलती कि विमेन सेफ्टी, क्या फर्क पड़ता? कृति कोई सुनता. मेरे से पहले बहुत लोगों ने बोला यार, biggest of celebrities, I think I'm a nobody in front of them, but things don't change. So yeah, I think this will continue. So that's the only way out. I think in a sentence, get detached from the problem, be focused, and ask for your right. Yeah, it's your basic right. You deserve it, and without any guilt or shame. I feel so.
This is amazing. This is so beautiful, ma'am. What you said, na, ki people when they saw a woman is leading something, they always say that she is too bossy, she is too arrogant. I usually feel that men hardly digest a woman leader before them. It's a very big problem for them that they can't really saw a girl moving forward, moving far from them, and It's intimidating. True. It's intimidating. Men have an ego issue. They have this ego problem where they don't want to take orders from a female. They have it. And one what you said, na, equality, yes, absolutely. I would say that the scenario might have changed a lot from our mother's time, and from today there are girls getting education, getting equal. But it's too soon to say that there is equality between boys and a girls, women and a male. Because I think no, because we are living in a two-tier, three-tier, in a metro cities, and if you saw a situation in a two-tier cities, it's completely different. It is something that has not changed. Yes, girls are getting married, getting education just for one thing, because they have to get married. Their parents her daughter to get education just for one thing, because he want his daughter because he want his daughter to get married to a good successful man. And now it's become mandatory for a girl to get education, to have some education. That's only the reason. Yes, at a ground level, there is no certain great changes we are seen as an equality between male and female. Yes, that's what I want to mention. And absolutely, this would never be a thing कि हम यहाँ पे बैठ के मैं भी कहती रहूँ कि यार women's safety is important, this is important, that is important, but it's very important what we are doing, what steps we are taking to make that thing happen in a good way. कि हम इस चीज को बात ही ना करें कि हर एक वुमेन सेफ्टी जरूरी है. Absolutely it is important, but I want to see a country like that where these topics are like worthless. यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हो, यहाँ पे इतनी अच्छी वो हो कि हम इस टॉपिक्स के बारे में बात ही ना करें. I really wish कि one day our society would have like that. It will for sure, slow and steady. Now no longer slow, because we are almost there. I just hopes and wishes, I don't know, but I just hope that the intention with which it has been created will impact la paye. And when you were telling me this marriage wala thing, that also reminds me of one thing, that in India they say that if a girl is pretty, she's set, but if she's intelligent, that doesn't really ensure that she's set. And by yeah, जे सुंदर है तो उसका फ्यूचर सिक्योर है कि कोई ना कोई तो उससे शादी कर ही लेगा, but if she's intelligent, that doesn't really make her set in conventional ways. तो आज के टाइम पे भी ना, it's like this is the problem, that women are objectified, girls are just supposed to be pretty, they say like be pretty and play safe, but intelligent hai, and these are the characteristics that are more important: being smart, being educated, being intelligent, being self-aware, being ambitious. Ye still comes at a second stage than looks for girls even today in India. That is the problem, and it's globally. So I think, I don't know when this will solve, and I think the only way to sort this out is that we need more women, Kriti. We need girls to go out unapologetically ask for it कि भाई मुझको ये चाहिए and I will take it no matter what. तो जब तक वो जिद्दीपना, या सही भाषा में बोलो ना, वो what do you call, ढीठपना नहीं आएगा ना within women, nobody's going to give you anything. I'm telling you, जब तक आप आराम से मांगोगे ना, आपको कोई कुछ नहीं देने वाला. You have to go out and make space for yourself. So yeah, that is what reminds me. You have to learn to ask things from society. You have to, without any shame. I mean, if I'm not doing any wrong to anybody, I deserve it. That's it. I deserve it. True. And the reason, and I think confidence plays a very important role in our personality, because if you're not confident, actually the way we have nurtured from our childhood is we are not that confident. Girls have never been that confident when they, in terms of nurturing, they always, when we are nourished with our brothers, we always see a difference between ourselves and the way our brother is treated. So the most important thing I believe is to build a confidence in ourselves. And if you build that confidence once, now it will work as a fuel to your personality, to groom you, to make you achieve whatever you want to achieve. And true, confidence is a women's best accessory. True. And one thing which came into my mind, I'm asking you for my perception. Sometimes, it happens, I know what I have to do. I know I have that certain plans in my mind, okay, this is what I want to do, this, that, everything is going into my mind. But the question comes, how to start this? How to start with, like, what the first step I should take? So yes, coming back to you again, have you ever felt like, yes, you have a vision, but you don't know how to take that vision forward into reality? So how you make your first step, how you all start with? Sure, Kriti. I think that's a very important question, and that is something that all of us face
like almost every day. तो अभी मैंने बहुत हीरोइक बन के आपको बोल तो दिया कि मेरे को VC पढ़ने में कुछ करना है, बट मैं करूंगी क्या ना मुझे नहीं पता. तो there are actually days when I sit with pen and paper and I write what is it that I want to do, and then I try to understand कि इसको practically execute कैसे करें. So I think it all starts with number one. मैं इसके बारे में ज्यादा exaggerate नहीं करूंगी. The first step is कि पहले तो ना बिल्कुल श्योर हो जाओ कि मुझे करना है. एंड उसका मतलब है कि जब आप सोचते हो ना मुझे करना है, सिर्फ ये मत सोचो दिमाग में कि मैं इसमें सक्सेसफुल होकर मेरा क्या होगा. कृति ये भी सोचना कि अगर वो नहीं भी होता, आफ्टर गिविंग इन टाइम एफर्ट एनर्जी, आई एम ओके विद दैट. तो सबसे पहले ना फ्यूचर की फेलियर आज ही एक्सेप्ट कर लो. दैट विल मेक योर जर्नी वेरी इजी कि यार चलो विदाउट एनी प्रेशर यू आर डूइंग इट. सेकंड, बी वेरी श्योर कि ओके आई वांट टू गिव इन द टाइम, क्योंकि टाइम इस टाइम पे एट योर एज, एट माय एज, आई एम नॉट दैट ओल्ड, टाइम इज एन इंपॉर्टेंट एसेट. तो टाइम यहाँ लगाओगे मतलब अपना जिंदगी का काफी एक्सपेरिमेंटल पार्ट दे रहे हो. तो उसके लिए नंबर वन, बी वेरी श्योर. नंबर टू, इवन इफ आई एम फेल, आई एम फाइन विद इट, आई हैव जस्ट लर्न समथिंग और द अदर. थर्ड, अब इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना होता है. आई थिंक what works for me is that I always sit with a pen and paper. I write what is it that I want, then I write कि यार ये काम मेरे से पहले किसी ने किया या नहीं किया, किया है तो कैसे किया. फिर मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू करती हूँ. आज 4G कनेक्शन है, लैपटॉप, अब तो 5G आ गया. यू हैव 5G कनेक्शन, यू हैव लैपटॉप, यू हैव इंटरनेट एक्सेस, देयर इज अबंडेंस ऑफ नॉलेज. सो द थर्ड स्टेप वुड बी एजुकेट योरसेल्फ ऑन टू दैट वंस यू आर श्योर. Second is okay, fine, I know even if I fail, that's fine. Third is education. Educate yourself. For example, if Kriti says कि यार मेरे को एक सीरीज शुरू करनी है where I only want to interview trans people, maybe you want to do it, for example. तो you jot it down. Now start educating yourself कि यार मुझसे पहले किसी ने किया है, अगर किया इसने कुछ सिमिलर किया है तो कैसे किया है, who is that person. Try to get in touch with them. Try to have conversations like this. So I think when you start paving your path ना, कोई एक प्री डिटरमाइंड ना कैटलॉग नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि कृति स्टेप 1 नहीं है, स्टेप 2 या स्टेप 3 नहीं है. हर किसी का जर्नी ना, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या एक विजन को रियलाइज करने में, बहुत अलग होता है. सबका बहुत अलग होता है. एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. जैसे एडमिशन के टाइम मुझे ये नहीं पता था कि किलकारी कुछ बन सकता है. वैसे ही शक्ति के टाइम या मैं दिल्ली क्राइम जब सीजन 1 देख रही थी, मुझे ये नहीं पता था शक्ति आएगा. सो इट्स लाइक इट ऑल स्टार्ट्स विद समथिंग दैट यू वांट टू डू, एंड व्हेन यू रियलाइज इट, it's step by step. That is what I can say. तो एक basic catalog नहीं है, but then it's very much personalized. For example, कृति को करना है, then you jot down that okay, how is it that can be done. Then basic चीजें चाहिए होती है. Management is something जो हमें पता होना चाहिए. Management of my time, of my resources. You know, with the limited resources that I have, what is the best I can do? Try to collaborate as much as you can. Starting space में ना collaboration बहुत ज़्यादा काम आते हैं. If you started this podcast series, try to collaborate with people who are already onto it. उनके साथ live करो for the people to get the eyes. Then try to understand. So everything is available online. So I think these are the 3 most important steps. So at least basic है हर किसी की journey में. And then you start. क्योंकि शक्ति के time पे भी मैंने पहले उन लोगों से बात की थी, like these calls to understand कि यार आपने product बनाया था but वो चला क्यों नहीं. I did that, but of course मैंने नहीं बताया था कि मैं शक्ति start कर रही हूँ. अब अगर वो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा. But I actually started with this only, where I talked to the founders who have kind of built SOS service जो product मैंने बताया to understand कि वो चला क्यों नहीं. फिर समझ आया. तो it's like a step by step thing. But 3 things that are must is you know clarity, knowing even if I fail that's fine, and third is educating yourself. And that is then it's up to his or her own. That is what I feel. I hope I've answered your question. Yeah, absolutely. I got much more clarity ki how I have to be clear. Yeah, वो करो and jot down, write a lot. वो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो रिसर्च जब तक नहीं करोगे ना, तब तक दिमाग में कंफ्यूज रहोगे. दिन में 10 आइडिया आएंगे, कैसे करना है, ये भी 10 चीजें चलेगी, कंफ्यूज हो जाओगे. तो उसको ना हमेशा जस्ट राइट इट डाउन. दैट हेल्प्स अ लॉट. एटलीस्ट इट हेल्प्स मी. तो मेरे को क्लैरिटी आ जाती है. एक चार्ट बनाओ, क्लाउड मैपिंग बोलते हैं उसको, माइंड मैपिंग बोलते हैं. तो दिमाग में ना ऐसे मैप्स बनते हैं. सो दैट रियली हेल्प्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ विजन इनटू रियलिटी. या Wow. Thank you so much, ma'am, for this tip. So, without wasting time, I just want to come up with my next question. That is like, you have seen a very good journey, entrepreneur journey. So what do you think, what's your most favorite aspect of being a woman entrepreneur? Like, I don't like to use term woman because we have to classify entrepreneur, but still, what's your favorite aspect? Well, I think I've told you this before also, and I would like to repeat that I'm working for the day where you don't call women entrepreneurs as women entrepreneurs. Again, women entrepreneurs or entrepreneurs, उनको entrepreneurs ही बोलो. Again, female founders should be called founders. But let's hope कि अगर हम 2-3 साल बाद बात करें तो ये चीज हट जाए. But to be very honest, यार, it's a very nice question, but it's very difficult also. अभी तक का सबसे मुश्किल question है, because what is a good thing in being women entrepreneur is something that I actually have to think. I won't say there are no bad things. There are no bad things because it's a conscious decision जो मैंने खुद लिया है. तो bad नहीं कहूँगे, but yes, there are a lot of gray areas of being a women entrepreneur. But then again, the only good part of being a women entrepreneur is maybe be one of those few women that are, I would say, privileged enough or fortunate enough to be able to thrive in a male dominant society. That's the only thing which keeps me going. कि यार ये शायद एक चीज अगर कर गई तो शायद बहुत लड़कियों के लिए दरवाजे खोल पाऊंगी. कल को अगर विमेन सेंट्रिक वीसी फंड बना दिया तो शायद बहुत लड़कियां जो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगी. सो आई थिंक दैट्स द ओनली गुड थिंग हियर.
उसके अलावा ग्रे एरियाज बहुत हैं जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट दैट इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. Ma'am, would you like to elaborate on those gray areas? Like little bit in briefly, you can explain. ग्रे एरियाज यही है कृति कि किसी भी सोसाइटी में एक मेजोरिटी होता है, एक माइनॉरिटी होता है. अभी मान लो पाकिस्तान में इंडियंस चले गए तो माइनॉरिटी है, तो नाउ दे विल नॉट बी ट्रीटेड दैट इक्वल ना, दे विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. तो वैसे माइनॉरिटी इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी. तो वैसे ना भी एंटरप्रेन्योरशिप की हालत है अभी, तो चलो धीरे धीरे सुधर रही है. नाउ शार्क टैंक आया, सो देयर वर 3 फीमेल इन्वेस्टर्स, सो आई वाज वेरी हैप्पी. बट देन वहां पे भी with due respect to all 3 of them, 2 of them are doing it with their husband, right? And then one is somebody who's inherited her father's business. तो वो भी सोल फीमेल फाउंडर कैटेगरी में इतना नहीं आया, although they are like they've done brilliant work and I respect everybody, but वो भी एक अलग कैटेगरी है जहाँ पे you had an external help. मैं बात कर रही हूँ फीमेल सोलो फीमेल फाउंडर्स की. तो ग्रे एरियाज बहुत हैं, जैसे एवरी माइनॉरिटी इज डोमिनेटेड बाय मेजॉरिटी, सो वैसे एट टाइम्स यू लुक डिफरेंटली, देन यू आर नॉट टेकन अप दैट सीरियसली. VC funding बहुत कम है to women-centric businesses. For Shakti also, a lot of people have told me, why don't you onboard a male co-founder? I've received these advices. Then what if you get married and you have kids? तो वो grey areas है, where people are still a little reluctant. जहाँ पे अगर शायद एक मेल एंटरप्रेन्योर होता तो उससे सब नहीं पूछते, बट मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे उससे प्रॉब्लम है कि यार अगर आप उनसे भी पूछो, मुझसे पूछो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट उनसे ना पूछ के सिर्फ मेरे से पूछ रहे हो, एंड इफ दैट बिकम्स अ रीजन ऑफ यू नॉट कमिंग इन, देन दैट इज अ प्रॉब्लम टू मी. तो ग्रे एरियाज वो हैं, एंड वो तभी सॉल्व होगा जब पावर आप अपने हाथ में लो. Basically, it's the age, gender is a sort of problems. Yeah. Because I don't know why, but even today, marriage, as per people, is the end of a women's ambition, right? So it's like, and I'm not an actress. That even if I have a child, how will it affect my career? I don't understand. But then again, I cannot say it because I'm not married, so I don't know. But one thing is for sure that it definitely comes with a lot of responsibility, and it comes more on the women in a different aspect. Of course, men also have to take care of the family, or unke alag pressures hai, which I really respect them for. I respect my father. Our fathers have worked their life hard to make sure that we are safe. So unke sacrifices ko main bilkul bhi compare nahi kar sakti. Tabhi main kehti hu, you can't compare a man and a woman. True. So we are not striving for that. But yes, it comes with a lot of responsibility. So ये gray areas है, where they're like कि यार एक आदमी जैसे एक business को खींच सकता है ना, आप शायद नहीं खींच पाओगे, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई, अगर आपके बच्चे हो, तो that is the gray area, that creates problem a lot of times. So that doesn't give people the confidence. और बहुत investors ने बोला यार, मतलब सृष्टि बात करके बहुत अच्छा लगा. We have not come across such passionate entrepreneurs, such passionate girls, but honestly, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि सर honestly बताओ क्या है. So that is when it is, and one of them is very recent, like अभी 15 दिन भी नहीं हुए, कि यार मेरे ना दिमाग में एक ये चीज रहती है कि लड़कियों का कल ये होता है, when you'll have a family तुम उनको प्रायोरिटी दोगे, तो that वो ना दिमाग में रहता ही रहता है. तो वो कुछ ग्रे एरियाज हैं. बाकी अच्छी चीजें तो क्या ही बोलना है. The only thing that keeps me going, and the good part here is that when the work is appreciated and when people believe that girls can do it, so that validation kind of gives me a lot of it gives me a kick. Or not that I'm waiting for that validation. I don't think I need anybody's validation. Nobody needs anybody's validation. But बस ऐसे लगता है कि यार अगर ये कर गई तो शायद और लड़कियों के लिए दरवाजे खोल पाऊंगी. That's the only thing. So that a lot of things यार. तो मेरा माइंड मैप चलता रहता है, तो मेरे को वहाँ अलग-अलग झंडे गाड़ने. देखते हैं अभी होगा नहीं होगा, I don't know. But yeah, that keeps me going. Oh, nice. मेरा जो next question है, which I'm not going to ask because मुझे not going to ask. But I should dictate my question. I was about to ask you, like, is there any weakness in you, like, which you? No, you should ask this question. Why shouldn't you ask this question? I was thinking that you might have answered because it was like कि over exaggerated तो नहीं हो जा रहा बार-बार एक ही one type. नहीं. Okay, so yes, I have a lot of weaknesses. Although in interviews like this, अभी आप मेरी achievement की बात करोगे, मैं अपनी strength की बात करूंगी, but I am somebody who will not shy away from telling my weakness. So my biggest weakness is my anger. So I am a very short-tempered person, and that is like one of my biggest weaknesses. And a lot of people have told me, both in my professional and personal life, कि यार सब बढ़ गया है, but अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आपको पता है आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. And by default ना शायद वो dominance जो है ना, वो काम की वजह से आ गया है. That is what I feel. So being dominating is fine, but my anger is my biggest weakness. I will say it. My anger has spoiled a lot of things. My friendships, my work, my relationships, my teammates. So my anger has really spoiled a lot of things. So that is one of my biggest weakness. My mom was actually like, we'll take you to anger management classes. I'm like, no, I'm not going anywhere. I consciously kind of work on this. So yes, anger is my biggest weakness, yeah. And I say it upfront, क्योंकि गुस्से में ना आप you take a lot of actions which are not, जो आप बाद में regret करते हो. तो मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है. I have this issue, like a major issue. Yeah. Okay, so in one word, you have described your weakness. So in one word, if I would ask, what's your strength? So what it would be? Confidence. Great. I think my confidence is one of my biggest strengths.
Okay, so ma'am, I'm done with my questions, which I have prepared in my mind, but I have one set of rapid questions which I would like to ask to you. I think Hello, we let's do might it. have done with this or not. I'm not recalling it in our March live, but yes, right now I No, want we to. didn't do that. No, हमने rapid fire शायद नहीं किया Okay, so let's do this. था. Okay, so my first question is, what do you wish you had known 10 years ago? That you should not give a lot of importance to random opinions of people. That's it. I wish I would have known this. Okay, who inspired you most and why? All-time favorite Priyanka Chopra. She inspires me a lot. Reason being, a self-made woman entering into an unknown territory, making her mark not nationally but internationally, where she is in the US and she's actually made the people in the US to, kind of respect and follow Indian tradition. So having that kind of impact, mark, and aura is something which is unbelievable. So I think she's opened a lot of doorways for a lot of people in our industry. So all-time favorite. I know it's rapid fire. I'll keep it short. No, Yeah. it's fine. Yeah, absolutely. Priyanka Chopra is inspiration for most of us. Okay, so describe yourself with 3 words. Confident, ambitious, Nice. and short-tempered. I'll be honest. Nice. Okay, so what is the one common myth which you want to debunk about your profession? One myth that I want to clarify. Yeah, you want to debunk. That women entrepreneurs, like solo female founders, can start up on her own without her father, her husband, and her boyfriend. She always doesn't need a man या connections. बिजनेस शुरू करने के लिए वो खुद भी अपनी मेहनत से कुछ कर सकती है. आई थिंक पीपल हैव दिस इशू, क्योंकि मेरे को भी बहुत बारी बोला है कि यार पापा बिजनेस में है क्या, किसने ये किया वो किया, तो पीपल हैव दिस थिंक यार किसी ना किसी आदमी ने तो सपोर्ट किया होगा टाइप्स. सो आई थिंक दैट्स अ मिथ which I really want people to know कि भाई ऐसा नहीं होता, खुद भी कर सकते हैं. I think that's what. Yeah. Okay, so what something people seems to misunderstood about you mostly? People misunderstand a lot of things about me, but one of them is that I am full of ego and attitude. No, I am not. I am very straightforward, but I am not egoistic. I would say I am somebody, like if I talk to you, I'm jolly enough. I don't, Yeah, and people are scared of me because they think that, I don't know. So it's like people have told me this, that look, we are scared of you. So this is like people, I mean, this is a misassumption about me. So I'm not egoistic. I don't have a lot of attitude, but yes, I'm straightforward. So please don't be scared of me. I'm always up for meaningful talks and conversation. Yeah. This is okay. No, Hey, people are scared of me. I don't know if I look that bad. Yeah, मतलब लोग बोलते हैं कि डर लगता है आपसे. मैंने कहा क्यों यार? So a lot of people and a lot of men actually, they say that I come as intimidating. So I don't know why, but I don't know. This is like a misassumption. Can't help it. Okay, so when you are most productive, day, night, midday? No, I'm not a night person. I cannot work after 7, 8 p.m. because I need my 8 hours of sleep. So I am active not early in the morning, but I would say like say 11 to 5, 6 is the time when I'm quite productive. रात को तो दिमाग ही नहीं चलता, तो I have to sleep. Yeah. Okay, so next question, what success means to you? It's a very subjective question, so that's why I asked you. Success for me means to be able to, look myself straight in the mirror and say that I've made it, whatever it is. It's like, I just want to be proud of myself, and that's it. That is success for me. And of course, content. I want to be satisfied with my life. So that is success for me. That's nice. What's the first thing you notice about someone when you meet them? First thing. I'll be very honest here. I am a very bad observer. Like when I meet you, until and unless you don't speak, I will not be able to notice anything. So I think the very first thing that I notice is how a person speaks, because I don't judge people by clothes, shoes and all. If you wear like the same dress 10 times, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, Kriti. I'm that bad as an observer. So I think communication would be the first thing. That how do you speak is the first thing that I would notice. Yeah, that's the first thing. That's nice. Like, okay, next, what's your hobby? Is eating a hobby? Like, say that I like it. Absolutely, it should be. So no, I'm serious. I'm not kidding. This might come as funny, but I love food. So I'm a foodie. So I love eating. If I'm not working, then I'm looking out different things to eat. So eating is my hobby. But I have to lose weight. So let's see. Yeah. Unique. Okay, what is important for you? Name, money or fame? Money.
Money. Fame is temporary, yeah. I mean, why do I need people's validation? It's good if people know what I'm doing. If it's good, I'm inspiring them. I think, but I think on a practical notion, money over fame. Yeah. Great. What is the best compliment you ever got? That I inspire them. I think if I'm actually able to inspire anybody, even one person for real, that is the biggest compliment that I've received. It's true. You really inspired lots of people, and I'm one of them. I so appreciate that. Again, you gave me the best compliment. So yeah, that's what it is. Okay, so what should I like? I'm done with my rapid questions. I have only these questions. So, what last two questions which I have? What I should ask to you that I didn't ask to you yet, which you thought, okay, Kriti will ask this. Sorry, ये पूछना चाहिए था. Kriti, honestly, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था. मैं तो as a friend, I always talk to you like a friend. So I never, had like a checklist to do. Things we've talked in the past, we didn't talk about Shakti, we have talked about that. So I think you pretty much asked about everything, and the best part is that you always keep the conversation candid. तो ऐसे कभी नहीं लगता कि एक question खत्म हुआ है और फिर दूसरा हम शुरू कर रहे हैं, वो एक extension ही लगता है, which keeps the conversation going. So thank you so much, ma'am, for coming onto my show, and it was a huge pleasure for me to host you as a guest on my show, and you are the first guest on my show. So thank you so much for coming, and we have a wonderful conversation. I always got lots of inspiration, motivation from you. So yeah, thank you so much. Thank you, Kriti. It's always amazing to speak to you. I've said this before also, and I'll say this now on record also, that it never feels that, there's any form of interview or, something of that happening, because it's always so, because, when you meet people, and especially girls, and as young as you are, being so ambitious and wanting to kind of, understand and vibe in, the conversations really get very organic. So thank you for having me, and very happy to actually be the first one on your show. I wish you all the very best. I just hope this one interview turns out to be that deal breaker for you, where, it gets more viral and people understand it. I'll definitely be more than happy to share it as much as I can. And all my support and all my love always. All the very, very best. You're doing great. Or koi kuch bhi bole, just be very much focused, because just know there's one person who will always have your back, and that's me. Not saying it for the sake of saying it, but I mean it. I do live for this vision where, more girls like you kind of stand up and do what they really want to do and ask for what they feel they believe. You deserve the world. So just believe in that, and all the very, very best. And thank you for having me. That's all. Thank you so much, ma'am. It's an amazing it's an amazing talking to you. Thank you for everything, every word which you have said. It literally mean a lot to me. Thank you. All the best. Thank you so much. Take care. Bye. Bye-bye.